Hello students, welcome in my channel Amazing Chem Path. So student, we are discussing organic chemistry. Now in today's lecture, nomenclature rules for the organic compounds we are going to start. So very important topic, how we are going to allot the names for the different organic compounds. So there are certain rules which are very important rules, as we are started this point from the last lecture and we understand the different points about the nomenclature system. But here we are going to start the rules of nomenclature. So what are the different rules of nomenclature, students? So one by one we are going to understand these rules. Very important rules are there. So first rule is very important rule, selection of carbon chain. So the first rule is selection of selection of selection of carbon chain. Selection of carbon chain. This is the first rule, very important rule, student. So how to select the carbon chain, that we are going to understand in this rule. So what is the rule? Selection of carbon chain. So you have to select the chain. How to select? So student, select the longest continuous chain of carbon atom. Okay, so in these points I will write here, select 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 longest chain of carbon atom. So select the longest chain of carbon atoms, and this chain is known as the parent chain. This chain is known as the parent chain. Keep in your mind, very important. So the selection of the longest chain is very important part, and this chain is known as the parent chain. Okay, so how to identify the longest chain? So this is the work that we are going to now discuss, and this is very important rule, very basic rule. So selection of carbon chain. So let us see the example of this, then these points will be clear for you. Suppose I am writing one example here. Suppose this is one example, carbons are attached with each other. This is the simple example. So in this example you can see there are total 1 2 3 4 5 carbon, and this all the carbons are attached with each other. Straight chain is there, so there is no doubt that this chain is the longest chain. So how many carbons is there? So 5 carbons. So 5 carbons is there. So for the 5 carbons, see, single bond is there between all this carbon. So we can use the word paint for that, paint. Okay, as we have studied the basic root names of the carbon. If in the chain 5 carbon is there, so we have to use the word paint. Understand? So this is the first rule, how to select the longest chain. So now in this case the chain is straight, student, so it is very easy to identify. But sometimes chain is in the branch condition. Let us see the example so we can. This is the straight chain. So straight chain means no problem, we can easily identify. But if suppose chain is branch, let us see the example. So 1 2 3 4 carbon is there, and I will write another one, 5 carbon. Now this carbon is attached with 1 2 3 and 4. Now you see properly, this is the example of branch chain, correct? Now in this case it is difficult to identify the longest chain, correct? Because if I will show the path to you, how the students are counting. So some students they are thinking like that, this is one way, correct? So you can see, student, if you are going in the straight way, how many carbons is there? 5 carbons, correct? So I will go, this is the first way, as a, here is the 5 carbon now, correct? So I will write here carbon is 5. This is the first way. If you are going to see this chain, there is the only 4 carbon, correct? So this is also 4 carbon, correct? This is the one way. There is another one way I shown you. Now there is another one way, third way I am going to show you by different color.
So suppose if you are going to take this, correct, so this way I am showing you here 1 2 3, and if you are going in this way, correct, now even though this is a branch but it is joined to each other, correct. So count the now number of carbon, which is very important. If you are going to count number of carbon 1 2 3 4 5 6 7, now see carbon is 7 student, okay. So this is another one way, and there is another one way is there, which is another one way. See here, from here 1 2 3, and now here you can see from this way you can go like this, correct. So this is another one way, correct, in this way. So 1 2 3, this is 4 5 6 and 7 only, understand. So here also 7 carbon. So student, this is very important. I show you 4 path. So in the 4 path, one path showing 5 carbon, one path showing 4 carbon, and 2 paths showing the 7 carbon. So as per the rule, select the longest chain of carbon atom. So this is going to neglect because this is very small, 4 and 5. So 7 is there, so you can select 7 carbon. This is the correct. So you can select by any way, correct, by this way or by this way, no problem, because in the both the way there is a 7 carbon, correct. So this is the actually selection procedure, and 7 carbon is there. As there is a 7 carbon and carbon carbon single bond is there, so the basic root name for that is the hept, okay. So 7 carbon is there, and the basic root name we are studied, so we are using the word hept. So this is the hept family, okay. So this is very important students. You must understand the first rule, which is actually the basic rule, which indicates that how you are selecting the longest continuous chain of carbon atom, understand. सो इन दिस वे यू हैव टू सिलेक्ट। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आपके समझ में आया होगा कि हमने नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स के कुछ डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में एक्चुअली रूल्स चालू किए मैंने। तो फर्स्ट रूल आपको मैंने बताया है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिए अभी। तो दो एग्जांपल्स दिए बच्चों। तो फर्स्ट एग्जांपल्स में स्ट्रेट चेन दिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल में जो स्ट्रेट चेन दिया है उसमें हमने देखी कि 5 कार्बन्स दिख रहे हैं आपको, और जो कि वो स्ट्रेट है तो आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि हाँ ये तो लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, सो 5 कार्बन्स है तो उसका हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड से रूट नेम भी देखा है, तो उसका नाम है पेंट। ओके, तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अभी सेकंड एग्जांपल में कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि उसमें मैंने दिखाया है ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन रहेगा तो फिर कंफ्यूज होना ही है। तो लेकिन अगर रूल साथ में होगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको मैंने पाथवे बताए, इसमें 4 पाथवे बताए थे। तो फर्स्ट पाथवे में स्ट्रेट चेन से अगर चले गए आप तो आपको 5 कार्बन मिलेंगे। सेकंड में नीचे के चेन में गए तो 4 ही कार्बन मिल रहे। और दूसरा पाथवे बताया जिसमें आपको मैंने ये ग्रीन कलर के लाइन में का पाथवे बताया है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि उसमें 7 कार्बन है। और बाद में फिर और एक पाथवे मैंने बताया आपको ऑरेंज कलर के पेन से, उसमें भी 7 कलर आपको 7 कार्बन मिल रहे। तो ये 4 पाथवे में से कौन सा सिलेक्ट करना है ये हमें डिसाइड करना है। तो एज पर द रूल हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो 5 और 4 वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा, वो तो रिमूव हो जाएगा, फिर रहेगा 7 वाला। तो 7 वाले में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको नंबरिंग देना है। और जबकि वो 7 कार्बन वाला है और उसका रूट नेम हमें मालूम होना चाहिए, उसका रूट नेम है हेप। तो वो जो है वो पेरेंट, जो मैंने बताया पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा हेप, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फर्स्ट रूल ही है बच्चों ये। तो अभी और भी बहुत हमें बहुत से रूल्स देखने हैं। तो ये फर्स्ट रूल के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रूल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक रूल है। इसको फिर से एक बार आप देख लीजिए। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो बनाने का अपना मकसद है कि जो भी रूरल एरिया के अपने बच्चे हैं, जो भी अभी लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते, क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियोस अगर उन तक पहुंच गए तो डेफिनेटली उनकी स्टडी में भी बेनिफिट वो ले सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माय चैनल।
Have a nice day, student.